Close, please. Namaskar and good evening. Honorable Chief Guest, Shri Purushottam Rupalaji, Honorable Union Minister, Animal Husbandry, Fisheries and Dairying, Government of India. Guest of Honor, Shri Atul Chaturvedi ji, Secretary Department of Animal Husbandry and Dairying. Eminent dignitaries on the dais, special invitees, policymakers and diplomats, officials of the central and the state governments, industry leaders, experts, and researchers, farmers, traders, and experts, respected members of the press and media, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the inaugural session of the India Animal Health Summit 2022, which is being organized by the Indian Chamber of Food and Agriculture, ICFA, co-organized by Agriculture Today Group and ICAR, and is being supported by Department of Animal Husbandry and Dairying. ICFA द्वारा एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ICAR एवं पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से आयोजित भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Ladies and gentlemen, India boasts the world's largest cattle population and produces the most milk. Yet per animal productivity remains low. Low productivity is caused by many factors, and the most important being animal health. And the objective of this summit is to provide a platform to all the key stakeholders in the animal health systems to showcase schemes, innovations, products and technologies and the best practices. And ladies and gentlemen, it's an honor that this inaugural session of the summit is graced by the Honorable Minister and other dignitaries. And I would request Dr. M.J. Khan to kindly do the honors of welcoming our Honorable Minister with a floral bouquet. A warm welcome to you, sir. Hardik Dhanyavad. I would request Dr. Khan to also welcome Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Shri Atul Chaturvedi ji. We welcome Dr. Praveen Malik, Commissioner Animal Husbandry. We welcome Dr. Umesh Sharma, President, Veterinary Council of India. We welcome Dr. Schillinger, DDG, International Livestock Research Institute. We welcome Dr. B.N. Tripathi, DDG Animal Science, ICAR. And we also welcome Dr. K.M.L. Pathak, Chairman, ICFA Working Group on Animal Husbandry. Thank you, Dr. Khan, for kindly doing the honors. And I would now request Dr. M.J. Khan, Chairman, ICFA, to begin the proceedings with his welcome address. थैंक यू सपना जी. गुड आफ्टरनून टू ऑल. मेरा बड़ा सौभाग्य है कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ऑनरेबल पुरुषोत्तम रूपाला साहब हमारे बीच में एज चीफ गेस्ट उपस्थित हैं. आज आईसीएफए की तरफ से कोई फॉर्मल प्रोग्राम एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए पहली बार हो रहा है, तो आपकी उपस्थिति सर बहुत इंस्पायरिंग हमारे लिए. मंच पे मौजूद भारत सरकार के सचिव पशुपालन विभाग श्री अतुल चतुर्वेदी साहब और डीडीजी इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीडीजी एनिमल साइंस आईसीआर डॉक्टर बी.एन. त्रिपाठी, डॉक्टर शर्मा प्रेसिडेंट वीसीआई, डॉक्टर प्रवीण मलिक एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर एंड डॉक्टर के.एम.एल. पाठक. आपसे गहरा रिश्ता है. आप डीडीजी एनिमल साइंस थे आईसीआर में. नाउ इज सपोर्टिंग अस क्वाइट क्लोजली एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल हेल्थ एंड माय कोलीग ममता जैन जी. बहुत खुशी की बात है कि आज टुडे वी आर होस्टिंग द फर्स्ट नेशनल समिट ऑन एनिमल हेल्थ. फॉर ए लॉन्ग टाइम वी हैड बीन डिस्कसिंग दैट वी नीड एन इनिशिएटिव ऑन एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर and very importantly on animal health management. Many of you who have been participating in ICFA functions for a long time, since year 2008 we started Agriculture Leadership Summit,
So I recall Dr. Pathak has been advising me, asking me that why don't a similar kind of program be replicated for livestock sector, animal husbandry sector. Somehow we were observing the developments, realizing the need and also planning from time to time, but somehow a formal initiative could never be formalized. Finally, we are meeting today at the first India Animal Health Summit. So welcome you all. And in the audience, I can see very important persons sitting. Very meticulously, my colleagues have worked out the sessions from starting from today and ending tomorrow evening when Honorable Governor of Gujarat is coming to present the Animal Health Awards to the key stakeholders. During the day, subsequent sessions that follow, very important sessions have been worked out and very important dignitaries representing cross-section of the key stakeholders in the animal husbandry and particularly the animal health sector. मेरे लिए particularly माननीय मंत्री जी शायद कभी आपसे ऐसा जिक्र नहीं हुआ, मेरी पहली जॉब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में थी. दूसरी जॉब MBA करने के बाद में इंडस्ट्री में थी, वो भी एनिमल हेल्थ सेक्टर में थी. But slowly we moved into general agriculture and continued for next almost 25 years. लेकिन आज से दोबारा एक कमिटमेंट सा है इस सेक्टर से जुड़ने का. बीच बीच में 2 बार ऐसा हुआ सर. वेटनरी टुडे हमने एग्रीकल्चर टुडे वाज लॉन्च इन 1998 एंड वेटनरी टुडे वी लॉन्च इन 2003. आफ्टर 3 years वी कुड नॉट रन इट, बट अगेन 2008 वी लॉन्च्ड. एंड उस टाइम पे आई एम हैप्पी कि कुछ दिन पहले आपने डॉक्टर पाठक साहब को रिकॉग्नाइज किया नागपुर में माननीय RSS प्रमुख साहब के मार्फत. 2008 में माननीय भागवत जी से बड़ा रेगुलर कम्युनिकेशन होता था बिकॉज वेटनरी टुडे हम चाह रहे थे वो लॉन्च करते, बट समहाउ डेट कुड नॉट बी वर्कड आउट, बट वी स्टार्टेड दैट अगेन. आई थिंक देयर इज ए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड. So now that I see a massive focus on the government of India on the critical areas of animal husbandry and importantly the health management, इस गवर्नमेंट का पहली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला हुआ था वो एनिमल हेल्थ के बजट पे ही था. FMD एरेडिकेशन के लिए शायद 10,000 करोड़ के बजट का प्रोविजन था. पहला स्टेटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इस करंट मोदी 2 जिसको हम बोलते हैं, इसमें पहला स्टेटमेंट नीति आयोग में था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर. पब्लिक स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रैपिडली ग्रो किया और $50 बिलियन क्रॉस कर गए. लेकिन पहला फॉर्मल जो डिसीजन था कैबिनेट में वो एनिमल हेल्थ पे था. तो उसके सब्सिक्वेंटली ऑल दी डेवलपमेंट दैट हैव बीन विटनेस्ड इन दिस सेक्टर इज अ मैसिव ग्रोथ. What happened probably before 2018 for many long years and what happened in the last 4 years probably may be greater in some respect than what happened preceding let's say 14 years. So सेक्रेटरी साहब की बड़ी इनिशिएटिव रही है एंड उनको कल रिकॉग्निशन भी है ICF की तरफ से. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दिस गवर्नमेंट क्रिएटेड दिस सेपरेट मिनिस्ट्री एंड दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि कितना तवज्जो है इस सेक्टर के पोटेंशियल को लेकर और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को लेकर. एंड स्टेट आफ्टर स्टेट वी सी दैट in many states the contribution of animal husbandry sector has overtaken the contribution of crop husbandry sector in the agriculture economy. And this trend is increasingly is coming from other states. So hopefully 5 years down the line, we see almost half the states of India will, see the animal husbandry contribution greater than the crop husbandry contribution. So thank you very much, Honorable Minister. आपका पर्सनल इतना तवज्जो इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में है और जिस स्पीड के साथ चीज़ें हो रही हैं. कुछ कंसर्न एरियाज हैं फॉडर मैनेजमेंट का particularly because there is a deficit in all the 3 segments of that. Green fodder may by and large we are close to being self-sufficient, but dry fodder is a matter of concern and so is the concentrates availability. जो emerging areas worldwide हैं इसमें related agricultural economy में, rural economy में, I think that little more attention may be required. That will go well. is entrepreneurship development, sir, startups का some food and agriculture मिला के close to 6,000 startups are there. एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े शायद 125 से 140 के बीच का फिगर चल रहा है. सो प्रोबेबली द साइज ऑफ दिस सेक्टर मस्ट हैव ए प्रोपोर्शनेट शेयर सो दैट वी गो अबाउट 500 समथिंग लाइक दैट. सो थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एंड न्यू एज स्टार्टअप्स बिकॉज दीज स्टार्टअप्स हैव
technology at their core of business models, and the way they plug the distortions and gaps in the value chain, supply chain, and the management systems, I think that will deliver a lot of value. Similarly, One Health के concept में जब environmental health, human health and animal health की बात होती है, environmental health आते एक global एक perspective निकल के आता, so therefore there is a need for greater global collaboration and collective efforts on that count. Export में भी sir, currently we are exporting ज़्यादा से ज़्यादा buffalo meat का, the small ruminant उनका export के possibilities एंड उनके मीट की पॉसिबिलिटीज़ दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, एंड जो मिल्क स्मॉल रेमिनेंट्स का है उसकी जो वैल्यू एडिशन से जो फ़ायदा होने का है, मुझे लगता है उस पर भी एक तवज्जो देने की ज़रूरत है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली फार्मर्स का जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली दी कृषि विज्ञान केंद्र जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हैं, बल्कि सभी 1000 के आसपास 900 जो भी नंबर है करेंटली, सभी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए एक हफ्ता सर साल में रिजर्व कर दें, जिसमें एनिमल हेल्थ रिलेटेड, एनिमल डिजीज़ रिलेटेड, एनिमल मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स का अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन लार्ज स्केल करना ज़रूरी है. बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम वी सा कि यहाँ पर भी जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो एनिमल हस्बेंड्री को बिल्कुल लास्ट एक प्रायोरिटी रहती थी. जो जनरल कृषि विज्ञान केंद्र हैं अल्टीमेटली फार्मर के लिए तो सब चीज़ एक ही, चाहे हॉर्टिकल्चर हो या क्रॉप साइंस हो या एनिमल हस्बेंड्री हो या पोल्ट्री हो, तो एक हफ्ता अगर इसको रिजर्व करें तो मुझे लगता है मच मोर सेंसिटाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सटेंशन सिस्टम टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी एंड नीड ऑफ दिस सेक्टर, दैट विल गो वेल. सो लेट मी thank you all, sir, for gracing this occasion, and I must give full credit to Dr. Pathak, who has been inspiring us for last almost 14 years that we must start with a large format program in animal husbandry, and then work on the programs in partnership with the state government. So subsequently, hopefully, we will be able to do quite more on the ground as well. So thank you very much, and let me thank Dr. Praveen Malik for a lot of support to this conference, and Dr. B.N. Tripathi Saab for his support, and of course the Veterinary Council of India. Thank you, D.D. Ilri, who has come all the way and being part of this. Thank you very much. Thanks. Thank you very much indeed, sir, for those warm words of welcome. और अब माननीय मंत्री एवं मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के समिट की औपचारिक रूप से शुरुआत करें. Ladies and gentlemen, we request the Honorable Minister and other dignitaries to kindly light the ceremonial lamp and formally inaugurate the summit. और जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के दीप प्रज्वलन के साथ आज के शिखर सम्मेलन की औपचारिक रूप से शुरुआत पर. Doing the honors is Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Shri Atul Chaturvedi ji. Ladies and gentlemen, as is customary, we light the ceremonial lamp before any auspicious occasion to invoke the gods and goddesses to guide and bless us for our endeavors. Hardik dhanyavad, sir. And may I now invite Dr. KML Pathak, Chairman ICFA Working Group on Animal Husbandry, to kindly address the August House present here. Good afternoon to all. Respected Shri Purushottam Rupala ji, Union Minister for Animal Husbandry, Fisheries and Dairying, Government of India, the chief guest of today's function. Honorable Shri Atul Chaturvedi ji, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Honorable Dr. Umesh Sharma ji, President, Veterinary Council of India. Honorable Dr. Dieter Joseph Schiller,
Deputy Director General ILRI, Honorable Dr. B.N. Tripathi Ji, Deputy Director General Animal Science ICR, Honorable Dr. Praveen Malik Ji, Animal Husbandry Commissioner, Government of India, Dr. M.J. Khan, Honorable Chairman, Indian Chamber of Food and Agriculture, Mrs. Mamta Jain Ji, Editor and CEO, Agriculture Today. I also join Dr. Khan in welcoming our chief guest and dignitaries on the dais and off the dais. Honorable Vice Chancellor Dr. Kelawala from Gujarat. Our senior Dr. Uppal Ji, Dr. Rahman, esteemed joint secretaries, policy leaders, esteemed deans and directors of ICR institutes, veterinary university and central and state animal husbandry departments, dignitaries and professional colleagues from industry, scientists, officers from ICR University, Department of Animal Husbandry, and esteemed participants from NGOs, colleagues from ICFA, persons from print and media. Sir, animal husbandry has been the most important integral part of our agriculture since ancient times. The Golden Bird chapter of Indian history was ablaze with rich livestock prosperity and diversity. अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सबसे ज़्यादा लाइवस्टॉक और खासकर इंडियन कैटल की उपयोगिता और महत्वता हमारे द्वापर युग में थी सर। और उस समय जो सोसाइटी में लोग हुआ करते थे जिनके पास सबसे ज़्यादा कैटल हेड्स हुआ करते थे उनके नाम और उपनाम उनके नाम पे दिए जाते थे। जैसे नंद नाम जो आया वो जिनके पास 9 लाख गाय होती थी, 5 लाख उपनंद आया, 5 गाय के पास 11 लाख जिनके पास गाय होती थी उनको वृषवाहन, और जो भगवान कृष्ण के पिता थे नंदराज जी उनका नाम नंदराज रखा गया नंद बाबा का, क्योंकि उनके पास 9 लाख के आसपास गाय थी। तो भारत की अगर हम मैंने कहा ना प्राचीन अगर हम अपने इतिहास को देखें और तो लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों एक साथ चलने वाले कंपोनेंट रहे। The long spell of foreign invasion rule, especially during British regime, changed this scenario. So much so that soon after independence, the country had to import food grains under PL 480, and the livestock component was also not in a good shape of health and productivity. We all know and we talk often that livestock provides livelihood to 2/3 of the rural population, especially the marginal and landless farmers. Animal provide nutrient-rich products, drought power, dung, domestic fuel, skin, hide, multiple employment, and are a regular source of cash income. Livestock is considered as the ATM for livestock owner and act as an insurance against natural calamities and crop failure. But this scenario changed, as I mentioned, that for the prolonged time, the livestock sector was not getting priorities in all the 5 years plans of the India. Despite the fact that the livestock sector is contributing more than agriculture in national GDP, the livestock sector receives lesser allocation of funds 5-year plans of state as well as central government. But in the last few years, the importance of livestock as a source of quality food has increased. Sustained income and economic growth, fast-growing urban population, changing lifestyle, rapid mechanization and invention of new technologies, and improvement in cold chain, storage and transportation are fueling rapid increase in demand of animal food products. We all know that we are number 1 in livestock population. We all know that we are number 1 in milk production also. And this is not for 1 year. For the last 10 years, we are standing at number 1 point. But we all know that the effect of the white revolution, the effect of the green revolution, it was in 1970s when white revolution was started. But due to this white revolution, the much progress or much attention was given for the increasing the production, and our own breed of cattle, they suffered a lot due to indiscriminate crossbreeding of our native cattle and with exotic breeds resulted decline in well-defined indigenous cattle population.
Friends, the situation changed after 2014, and this livestock sector has undergone drastic changes. This is to be reckoned that in the entire history of post-independence era, animal husbandry sector has been accorded a proper place in the priorities of national planning for the first time in India. The Department of Animal Husbandry and Dairying was renamed as Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries under a separate ministry in 2019. Union government has launched many new schemes like Livestock Mission, National Livestock Mission, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, Rashtriya Gokul Mission, National Program for Dairy Development, Dairy Processing, Infrastructure Development Fund, Livestock Health and Disease Control. And I am happy to say that the thing which Dr. Khan also mentioned, इसी हॉल में 2014 में हमारे सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी जब ICR के फाउंडेशन डे में आए थे और इसी हॉल के अंदर अपने संबोधन में उन्होंने 2014 में he gave the emphasis and he said very clearly that now let us give priority to the livestock sector. इसी हॉल में यहीं बैठ के and he was talking to the scientist and उसी की बात जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन और अलग परियोजनाएं प्रारंभ हुई. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 75 साल के बाद पहली दफे नेशनल लाइवस्टॉक डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2019. आज तक किसी कैबिनेट की मीटिंग में इतना बजट नहीं आया जितना वो बजट एलोकेशन फॉर डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में. The thinking of our honorable Prime Minister was that let us give importance to the livestock health. Because production, there are three pillars in livestock or animal husbandry: the good breed, good health, and good nutrition, so that we can get the maximum production. And health was given the priority by our honorable Prime Minister. In 2017, more than 13,000 crore बजट वाज अलॉटेड. और उसके बाद आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी हैं, हमारे माननीय सेक्रेटरी जी हैं. जितना डेवलपमेंट एनिमल हेल्थ सेक्टर में हो रहा है इससे पूर्व पहले नहीं हुआ था. एंड दैट वाज द रीजन विच क्लिक्ड मी एंड आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर खान, नाउ लेट अस हैव ए forum where the people from industry, people from academia, people from research, they can sit together and address this issue, which is our honorable Prime Minister trying to resolve. Doubling farmer income is a dream project of our honorable Prime Minister, and it was made clear in this hall that the doubling farmer income means the income, doubling the farmer income through the crop as well as through the livestock and fisheries. And that is the reason आप देख रहे होंगे कि इन गाँव में and particularly in the rural areas where there is no land available with the farmer or fragmented land is available, the farmer is trying to adapt the livestock farming. And we can say that a gauge in crystal ball shows that the average annual growth rate of livestock sector is more than agriculture counterpart. And Honorable Minister Sir, the contribution of livestock sector GDP exhibiting a steady upward trend, and this is pointing toward a paradigm shift that the animal health and productivity are no more an allied sector and component and poised to become a driver of growth in rural economy. That is my submission based on the facts which is given by the Statistics Department of Animal Husbandry and Dairying. Considering all these facts, we decided to organize a conference where, with a broader objective, to consider how the food security and nutritional requirement of the country can be met with the overall economic development. And ICFA is hosting, first time it is happening in India, that ICFA is hosting the first Indian Animal Health Summit with the technical support of Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India and ICR. The summit will definitely explore the role and contribution of states in animal health sector
as well as it will provide opportunities and help them adopt a holistic approach for animal health management. Moreover, the summit is providing a platform for industry, research and academic institutions, veterinary practitioners, state government, key stakeholders and other development professionals from across India and they will deliberate upon policy and regulatory ecosystem, business and market, technology and innovation, investment and startup, production and delivery system, digital technology and emerging trend in animal disease control. Sir, the summit will also address an important program which has been launched under your leadership, that is One Health program, which has recently launched by the Department of Animal Husbandry, Dairying, Government of India. And sir, looking to this requirement, we have invited people from research academia, from industry, and we have invited the farmers also, we have invited the policy makers also, and there is a representation from Veterinary Council of India, Dr. Umesh Sharma, the president of VCI. We have international organization ILRI, which is cooperating us in animal health sector. So I think this type of combination has never happened. इससे पहले सिम्पोजिया और सेमिनार तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस तरह का सिम्पोजिया नहीं हुआ जहां एक प्लेटफॉर्म पे all the stakeholders are sitting at one place. So that's why I want to congratulate Dr. Khan and Madam Mamta ji for organizing this wonderful program. और आज इसमें 4 चांद लगे हैं. हमारे इसकी उपयोगिता बढ़ी है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी इस प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट हैं. सर, आपका आशीर्वाद और आपका दिशा निर्देश निश्चित रूप से इस वेटनरी प्रोफेशन, पर्टिकुलरली एनिमल हेल्थ सेक्टर, क्योंकि बिना एनिमल हेल्थ के, आपको भी मैंने कई बार सुना है माननीय मंत्री जी को, आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बिना हेल्थ के जानवर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते. दोनों चीज़ें जरूरी है. अगर न्यूट्रिशन जरूरी है तो जानवर का स्वस्थ रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो इन सब एस्पेक्ट पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 दिन की जो सेमिनार है, एंड वी हैव ट्राइड टू इनवाइट द पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स आल्सो, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं होंगे, पॉलिसी मेकर्स नहीं होंगे, साइंटिस्ट नहीं होंगे, और एक साथ मिलकर जब तक इस पर मंथन नहीं होगा, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. इसी वजह से आप सबका मैं यहाँ पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ. और मैं फिर पुनः हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रूपाला जी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. और बाकी जितने स्टेज पर जो मान्य बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं. नमस्कार, जय हिंद. हार्दिक धन्यवाद. And ladies and gentlemen, we now would like to invite Dr. Umesh Sharma. He is President, Veterinary Council of India, to kindly say a few words. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome him. आज के इस एनिमल हेल्थ समिट कार्यक्रम में उपस्थित इस देश के यशस्वी पशुपालन मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला सर, पशुपालन डेयरी विभाग के सचिव आदरणीय अतुल चतुर्वेदी सर, डॉक्टर प्रवीण मलिक जी, डॉक्टर BN त्रिपाठी जी, डॉक्टर जोसेफ जी, डॉक्टर KML पाठक सर, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन MJ खान जी, और एडिटर CEO मिसेज ममता जैन जी. आज मैं देख रहा हूं कि पहली बार एनिमल हेल्थ पर इतना बड़ा समिट करने के लिए इस सभागृह में उपस्थित मैं देख पा रहा हूं कामधेनु यूनिवर्सिटी के कुलपति बहन फागुनी ठाकुर, उपल सर, सिंधुरा जी, विभिन्न राज्यों से आए पशु चिकित्सक, पशु चिकित्साविद. मैं एग्रीकल्चर टुडे का हृदय से वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि देश की 56-60 करोड़ पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए उन्होंने आज ये फोरम किया. मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं. हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 19 में उन्होंने इस डिपार्टमेंट को अलग किया
उनका सोच था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में उनकी विशेष रुचि थी। हम देखते थे कि उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर को, आज चतुर्वेदी सर से बात हो रही थी, कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आई के ऑपरेशन के लिए अमेरिका डॉक्टर भेजे थे हमारे वेटरनरियंस। इसलिए उनका जो सोच था कि 2019 में उन्होंने इस विभाग को अलग किया। लेकिन मैं आज इस बात को रखना चाहूँगा कि वास्तव में जो वेटरनरी की ताकत है, देश के अंदर पशुपालन की जो ताकत है, भारत के अंदर 12 लाख करोड़ का दूध पैदा होता है। जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 12 लाख करोड़ है, 8.5 लाख करोड़ का दूध पैदा होता है। 7 करोड़ परिवार जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हैं, यानी 32 करोड़ लोगों की आजीविका का सीधा साधन है। एक वेटरनरी डॉक्टर को जो काम करना पड़ता है देश के अंदर, वो 3 प्रकार का उसका काम है। एक काम है कि उत्पादन वाले जो पशु हैं उनको ट्रीटमेंट, उनका मैनेजमेंट। दूसरा इशू है हमारे पास पेट एनिमल, उनके ट्रीटमेंट की चिंता करना। और तीसरा है वाइल्ड लाइफ का ट्रीटमेंट करना। हमारा जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है, उसका जो डिजाइन है, उन तीनों प्रकार के काम वेटरनरी डॉक्टर को करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज यहाँ फोरम पे माननीय मंत्री जी बैठे हैं। हम लोग 4 लोग हैं डिपार्टमेंट में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आए हैं। माननीय मंत्री जी हैं, हमारे 2 राज्य मंत्री हैं, मैं स्वयं भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हूँ। और मैं देखता हूँ माननीय मंत्री जी को कि हम सब में सबसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो जिस प्रकार से फील्ड विजिट कर रहे हैं। अभी वो नागालैंड में गए थे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने वहाँ वेटरनरियंस के हॉस्पिटल और सब यूनिवर्सिटी में वहाँ गए और उन्होंने उन चीज़ों को देखा। यानी कहीं ना कहीं नीचे से जो फीडबैक है उसके अनुसार काम करना, ये मुझे लगता है हम सबको उनसे सीखना चाहिए। हम लोग भी प्रयास करते हैं जाने का फील्ड में, लेकिन सबसे बड़ा जो आज एनिमल हेल्थ समिट में मैं जो अपने विचार रखना चाहता हूँ कि अभी वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी एजुकेशन, इस 75 साल के अंदर न्यूनतम मानक वेटरनरी के हॉस्पिटल्स के क्या होना चाहिए, इस पर एक काम प्रारंभ किया। और उसकी रिपोर्ट हमने देश भर के समस्त स्टेक होल्डर के साथ हमने बातचीत की और उसको हमने रिपोर्ट को फाइनल करके हम 1-2 दिन के अंदर माननीय मंत्री जी को सबमिट करने वाले हैं। इस देश के समस्त स्टेक होल्डर के साथ हमने काम किया। सबसे बड़ी बात जो मंत्री जी का एनिमल हेल्थ मतलब यानी हॉस्पिटल, हमारा जो गांव में एक पशुपालक है, एक जो किसान है, जब वो हॉस्पिटल में पशु लेके जाता है तो उसको वास्तव में जो क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज जो मिलना चाहिए, ये हम सबका दायित्व है, क्योंकि उसका एनिमल से ही उसकी आजीविका चलने वाली है। कभी कभी मैं देखता हूं कि वनवासी क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं कि वहाँ जो एनिमल है अगर वो बीमार हो जाता है तो पहले वो हमारा जो वनवासी बंधु है वो पहले अपने एनिमल को दिखाना पसंद जाता है हॉस्पिटल में। बच्चे अगर बीमार उसको बाद में दिखाता है क्योंकि उसकी आजीविका उसी से चलने वाली है। और एक हमारा दायित्व भी बनता है कि देश के अंदर क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज उपलब्ध हो। कई जगह देखने में आता है, फागनी बहन बैठी है यहाँ, मैं भी कई राज्यों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कई बार औषधालय चिकित्सालय तो हैं लेकिन उसमें मैन पावर नहीं है। ये सब आप लोग देख रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको करना है फील्ड में तो आपको मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई नई टेक्नोलॉजी जो आई उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने बिल्कुल एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन देश में 2 प्रकार से काम करेगा। एक तो हम जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा विचार है कि किसी भी जीव को ठीक से चिकित्सा व्यवस्था मिलना उसका भी एक अधिकार है, एक तो उसको वो मिलेगा। दूसरा हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छे सिस्टम के साथ उनको वहाँ सलाह मिलेगी। दूसरा कई प्रकार के मैं देख रहा था एंटरप्रेन्योरशिप, अभी मैं देख रहा हूँ वेटरनरी में काफ़ी वेटरनरी डॉक्टर एंटरप्रेन्योरशिप में वो अच्छे हॉस्पिटल्स व प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं। मेरा मंत्री से अनुरोध है कि जिस प्रकार से कोई कॉलोनी कम्युनिटीज़ जैसे हेल्थ सेंटर होते हैं उस प्रकार वेटरनरी कि अगर हम लोग हॉस्पिटल्स भी अगर वहाँ जगह चिन्हित करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में हम लोग नए कोर्सेज समय के अनुसार जो परिवर्तन है देश के अंदर उनके अनुसार कोर्सेज स्टार्ट करने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है और एक कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आने के बाद माननीय मंत्री जी को सबमिट करेंगे। सबसे बड़ा एक जो विषय हमारे लिए आता है कि आजकल जो फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी है, मैंने माननीय मंत्री जी को डीओ लिखा था कि कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट जो कि वेटरनरी में यूज होते हैं उन पर कुछ सब्सिडी अगर वेटरनरियन को दे दी जाए तो वो अपने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रूपाला जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि एक जो सबसे बड़ी समस्या गाँव में थी किसानों के बीच में, चूँकि आज एनिमल हेल्थ का विषय है, बड़े लार्ज एनिमल के जो है हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता था, उसका चिंता की। और देश में जो मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी, जो क्रांतिकारी कदम इस देश के अंदर आप लाए माननीय मंत्री जी, इस देश के हजारों लाखों करोड़ों किसान कभी भी माननीय प्रधानमंत्री आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा ये देश कि आपने इस देश के अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि एक फ़ोन कॉल के बाद उस व्यक्ति को, जो कहते हैं ना क्वैकरी बढ़ रही थी वेटरनरी में, कई बार होता था कि उसको कहीं गाँव में उसने दिखा लिया लेकिन उसको क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज नहीं मिलती थी। इस मामले में सेक्रेटरी साहब और सब लोगों ने जो प्रयास किया और जिस प्रकार से उसका फील्ड में हम लोग जाते हैं किसानों के बीच में, वेटरनियन के बीच में, जिस प्रकार से उस योजना का जो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका सपोर्ट किया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वेटरनरी में, एनिमल हेल्थ के मामले में हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर होंगे। ये इतनी अच्छी योजना है, बस समय समय पर उसको रिव्यू करने की जरूरत है और उस आवश्यकता के साथ उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यहाँ एनिमल हेल्थ समिट में अभी जो सत्र चलने वाले हैं, विभिन्न विषयों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी पॉलिसी बनाएं, जो भी नीतियाँ बनाएं, उस नीतियों को हम केवल गरीबी रेखा अंतिम छोर पर जो खड़े व्यक्ति हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, जिनका आजीविका चलने वाली है, उस दृष्टि को रखते हुए हम उसको आगे बढ़े। हमने भी इस बार तय किया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड वेटरनरी एजुकेशन जो 2016 था, उसमें हम परिवर्तन करने वाले हैं और हमने सभी स्टेक होल्डर से देश के अंदर कहा है। अभी मेरी बात हो रही थी सेक्रेटरी साहब से कि आयुर्वेदिक जो हमारा अपना इंडिजीनस है उसको भी हम सम्मिलित करने वाले हैं, होम्योपैथी भी सम्मिलित करने वाले हैं। और मेरा इस समिट में भी आप सब लोगों से आग्रह है कि वेटरनरी एजुकेशन में और क्या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, इस प्रकार का सुझाव आप अपने मन से दीजिए। हमारा मेल है, आप मुझे भी बता सकते हैं और हम लोग इस सब पूरा परिवर्तन, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वेटरनरी प्रैक्टिस को भी रेगुलेट कर रही है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव हमने लिए हैं। हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमको 2 एकड़ लैंड यहाँ हमको मिली है। हम बहुत जल्दी उसमें कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा सेंटर डेवलप करेंगे और आने वाले समय में मुझे लगता है देश के वेटरनियन के लिए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी नए आयाम स्थापित हो सकते हैं करेंगे हम सरकार के साथ मिलकर। और हम पुनः एग्रीकल्चर टुडे के चेयरमैन और ममता जी को हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने इस प्रकार से एक हेल्थ समिट किया और इसकी जो रिपोर्ट है हमारे लिए भी, जो भी कोई वेटरनरी काउंसिल को भी आप भेजेंगे, हम भी जो उसमें लागू हमारे तरफ से कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। आपने आज मुझे बुलाया, आज हमारे बीच में यशस्वी मंत्री जी भी हैं, क्योंकि हम सब उनको सुनना चाहेंगे। उनका एक लंबा अनुभव है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबा अनुभव है। हम सब उनको सुनने आए, यहाँ उनके विचारों को सुनने आए। आप सबने बुलाया, मैं आपका सभी का वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक धन्यवाद सर। Ladies and gentlemen, we now invite Dr. B.N. Tripathi, DDG Animal Sciences, ICAR. आप सभी को नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि माननीय मत्स्य पशुपालन एंड डेयरी केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रूपाला जी, माननीय श्री अतुल चतुर्वेदी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डॉक्टर प्रवीण मलिक, माय एक्टिंग कलीग, इन्वायरमेंट कमिश्नर, डॉक्टर डीटर जोसेफ स्लिंगर, डीडीजी International Livestock Research Institute, Dr. Umesh Sharma, President, Veterinary Council of India, Dr. K.M.L. Pathak, Chairman, ICFA Working Group on Animal Husbandry, और इस सेमिनार, इस समिट के कर्ता धर्ता डॉक्टर M.J. खान, Chairman, Indian Chamber of Food and Agriculture, and Mrs. Mamta Jain, Editor CEO, Agriculture Today Group. Honorable Vice Chancellors, Dr. Rahman, former DDG and currently looking at ILRI work in India, Director of ICR Institute and Scientist, Dr. Sindura, Dr. Uppal, officers and staff from Department of Animal Husbandry and State Animal Husbandry Department, and also Director of State Animal Husbandry Department, student, ladies and gentlemen, print media, electronic media. आज
आज बहुत बड़ी समिट हो रही है हेल्थ में पहली बार, और मैं इसके लिए डॉक्टर खान को इस पिछले कई महीने से इस पर लगे हुए थे कि किस तरह से एक प्लेटफार्म पर सबको बुलाया जाए, केवल साइंटिस्ट को ही नहीं, साइंटिस्ट को, एडमिनिस्ट्रेटर को, पॉलिसी मेकर को, इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, ताकि हर तरफ से हम एनिमल हेल्थ पर डिस्कस कर सकें, योजनाएं बना सकें। और जो मंत्रालय आज काम कर रहा है, एक मंत्रालय मिलने के बाद भारत सरकार ने जो मंत्रालय बनाया, जिस तरह से पशु स्वास्थ्य पर, पशुपालन और पशु स्वास्थ्य पर, दोनों पर जो एक बूस्टअप मिला है देश को, वो अपने आप में अतुल्य है। और इसके लिए माननीय मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी साहब सेतु चतुर्वेदी जी, इन दोनों हम लोगों के स्वागत के, अभिनंदन के योग्य हैं कि एक आज देश में पशुपालन के क्षेत्र में एक अजीब सी क्रांति आई हुई है। जैसा कि हमारे पहले स्पीकर ने बताया कि हम बहुत आजकल एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स बन गया है इनकम का, फार्मर्स के इनकम का। जीडीपी में हम 30% से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं एग्रीकल्चर जीडीपी में। देश के जीडीपी में मंडी ज़्यादा 4% से ज़्यादा योगदान दे रहा है। और जब हम डिकेडल ग्रोथ देखते हैं 10-10 साल का, तो फिशरीज के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी में आई हुई है। तो इस ग्रोथ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने एनिमल हस्बेंड्री सिचुएशन जो हमारा पशुपालन है देश का, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस भी लगता है। 3% से ज़्यादा कम लैंड रह करके दुनिया का हम 17% ह्यूमन पॉपुलेशन और 12% देश वर्ल्ड का एनिमल पॉपुलेशन को हम आपस में कंपटीशन हो रहा है देश में। 850 मिलियन से ज़्यादा हमारे यहाँ पोल्ट्री बर्ड्स हैं, 536 मिलियन एनिमल्स हैं, लगभग 54 करोड़। इनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी मांगें बढ़ रही हैं, हमारा मिडिल इनकम ग्रुप जो देश का है बढ़ रहा है, सबके एनिमल प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसीलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, और ये ताज्जुब नहीं होगा, कुछ स्टेट में तो 40 से 50% हो गया है एनिमल मंडी का योगदान जीडीपी में एग्रीकल्चर का, और ये बहुत जल्दी पूरे देश में लगभग अगले 10 सालों में 40% हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो हमारा दूध बढ़ रहा है हर साल 10 से 12 मिलियन टन बढ़ रहा है, उसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। बीमारी का पहली बार जब पार्लियामेंट में सीतारमन जी ने कहा कि 13,000 से ज़्यादा करोड़ हम एक डिजीज़ का नाम दिया FMD PPR, तो पहली बार पार्लियामेंट में एक एनिमल डिजीज़ का नाम लिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और 13,000 करोड़ से ज़्यादा दे करके जिन 4 बीमारियों को आज भारत सरकार देशव्यापी उन्मूलन काम कर रही है, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। और जहाँ तक ICR की जब हम बात करते हैं, ICR का अपने पूरे देश में क्या योगदान रहा है पशुपालन के क्षेत्र में और पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। आज लाइवस्टॉक की जितनी भी वैक्सीन बनी हैं देश में, लगभग 30 वैक्सीन से ज़्यादा, वो सारी वैक्सीन ICR ने बनाई हैं। अब कुछ हेल्प करके अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी हेल्प ले करके। और हम देखते हैं कि हमारी क्या डिमांड है, और डिमांड के होते हुए, और ऐसा नहीं कि ये वैक्सीन हमारी लगातार एक ही वैक्सीन चल रही है, उसमें हम उसको रिफाइनमेंट करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं देश में। और पिछले ही हमने 2-3 सालों में हमने कई वैक्सीन, जैसे ब्रूसेलोसिस के दिया है, हमने शिपॉक्स वैक्सीन भी दिया है, और हमने अभी कोविड की वैक्सीन भी बनाया है। अपने हम सो में तो हम संज्ञान लेकर के हम देश की जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक किट हमने डेवलप किया है, जो कि जिन तरह के हमारे डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, सीरोमोनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है देश का, उन सब में उन डायग्नोस्टिक किट्स का यूज हो रहा है। हमें भी सुनिश्चित करते हैं कि देश में कोई बीमारी बाहर से ना आए, और कम से कम 30 डिजीज़ हैं जो कि हमारे ICR के जो नेसाद है, चाइना से क्वाइन है, इन 30 डिजीज़ जो हमारे इमर्जिंग हैं, री इमर्जिंग है, एक्जोटिक है, उन पर हम एक विजिलेंस रखते हैं हमेशा।
और आज तक पिछले 25 सालों में पिछले कोई भी बीमारी किसी लाइव एनिमल के इंपोर्ट से या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के इंपोर्ट से हम पर आई हुई है। ये बात अलग है, इट्स मैटर डिफरेंट मैटर दैट वी हैव इंपोर्टेड सम डिजीज लाइक अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड लंपी स्किन डिजीज। फॉर दैट वी आर आल्सो वर्किंग। और इसके बाद हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान हमारा चल रहा है, चाहे वो एवियन इन्फ्लुएंजा का हो, चाहे वो ग्लैंडर्स का हो, और इसके बावजूद जो वन हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, हम पूरे देश में, हमारे लिए वन हेल्थ नया नहीं है। One Health is not new for veterinarians. We have been reading, teaching veterinary public health since ages. It is a new aspect for medical people who have never realized that 60% of all diseases of human comes from the animals. And more than 75% of diseases which are emerging in the last 20 years, they are all of animal origin. So we have realized those things already. And we know that how we are working on a One Health aspect, including zoonosis, foodborne zoonosis. हम AMR पे भी काम कर रहे हैं और पूरे देश में हमारे 30 सेंटर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मंडी के साथ मिलकर भी हम AMR पे काम कर रहे हैं। जितनी बीमारियां हैं, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, हम पशुपालन मंत्रालय के साथ मिल करके को चाहते हैं कि जितना से जितना हमारी फार्मर्स के पास पहुँचे। और KVK में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि KVK में भी ये प्लान बन रहा है कि उनको भी ये प्लान दें, ताकि हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की कम से कम केवल 5 से 10% टेक्नोलॉजी फार्मर्स के पास जा रही है। तो जो एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और सेक्रेटरी साहब भी इसमें काफ़ी एक्टिव है, हमेशा कहते रहते हैं किस तरह से हम अपने जो हमारे SMS हैं, जो वेटनरी साइंटिस्ट हैं, एनिमल साइंटिस्ट हैं, KVK में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को फार्मर्स को बताएं ताकि वो उसका लाभ ले सकें। साथियों, आज आई थिंक मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक पूरे देश का डिजीज सर्वेलेंस कर रहे हैं पूरा। कम से कम 13 बीमारियां ऐसी हैं जिस पर कि हम सर्वेलेंस करते हैं और उनकी फोरवार्निंग और फोरकास्टिंग भी करते हैं पूरा। और इसको ये हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक करते हैं, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम इसको विलेज लेवल तक ले जाएं ताकि डिजीज़ कहाँ होने वाली है ये भी हम इसकी फोरकास्टिंग कर सकें, ताकि उसके अनुसार वेटनेरियन फार्मर्स जो है इसको उसमें हेल्प अपने उनको जो है जो रेमेडियल मेजर्स है उनमें उसको ले सकें। साथियों, टैट्स है जो कि आजकल सबसे बड़ी मुश्किल बात हो गई है। जितने हमारे ट्रांसबाउंड एनिमल डिजीज़ हैं, कम से कम 17 ट्रांसबाउंड एनिमल डिजीज़ है, जिसमें कि 12 कम से कम हमारे देश में है। चाहे कैटल बफलो हो, चाहे FMD ले लीजिए, उस पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सरकार प्रोग्राम चला रही है। उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हम दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, अल्टरनेटिव मॉडल निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। PPR में हो, चाहे क्लासिकल स्वाइन फीवर हो, ब्रुसेलोसिस हो, इन सारे डिजीज़ पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और अगले 5-10 सालों में आपको इनका इम्पैक्ट पता चलेगा, किस तरह से FMD काफ़ी वैसे भी कम हो गई थी। जहाँ के हज़ारों आउटब्रेक्स होते थे और सैकड़ों में होते हैं, वैसे बुसल्ला के क्षेत्र में हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। PPR हमारा काफ़ी लॉस हमारे कम हो गए हैं। ऐसे और जरूरी डिजीज़ हैं जैसे शीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, ब्लू टंग है, और ख़ास तौर से और पोल्ट्री में जो हमारे 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं, टाइड्स हैं, जिसमें कि एवियन फ्लू और न्यूकासल डिजीज़ आता है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि ये हमारे देश में जो फार्मर्स को कम से कम इसका लॉस हो। तो इस तरह से ICR सिस्टम पूरे देश के पशु स्वास्थ्य, पशुपालन व्यवस्था पर एक नज़र रखता है और टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए उसको हम जो है उसका हम डेवलप करते रहते हैं, उसका रिफाइनमेंट करते रहते हैं। थोड़ी सी समस्या आती है कि हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाता, उनका फर्म नहीं ले पाती। और आशा है कि अगले जो नेक्स्ट आज और कल में हम पर डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वैक्सीन्स हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा जो फार्मर्स को मिले। मैं आप यहीं पर अपना वक्तव्य जो विराम देता हूं और एक बार फिर मैं डॉक्टर खान को, उनकी टीम को एक मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर हम सभी को a very heterogeneous group of people where scientists, academicians and teachers, policy makers, industry, all have been gathered here, and perhaps we are going to churn out very thoroughly here, and when we will come out with some recommendation that will be quite helpful for this country. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir. Ladies and gentlemen, we now have the privilege in inviting Commissioner Animal Husbandry, Dr. Praveen Malik. Let's put our hands together to welcome. धन्यवाद मैडम। नमस्कार।
माननीय केंद्रीय मंत्री फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब, माननीय सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री अतुल चतुर्वेदी जी, डीडीजी एनिमल साइंसेज आईसीआर डॉक्टर बीएन त्रिपाठी, डीडीजी इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च सेंटर डॉक्टर डाइटर जोसेफ, प्रेसिडेंट वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर उमेश शर्मा, आईसीएफए वर्किंग ग्रुप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के चेयरमैन डॉक्टर केएमएल पाठक, जो हमारे फॉर्मर डीडीजी एनिमल साइंस भी थे और वाइस चांसलर मथुरा यूनिवर्सिटी, और हमारे कामधेनु आयोग के भी एक सदस्य के रूप में आपने कार्य किया है। डॉक्टर खान, चेयरमैन इक्फा, श्रीमती ममता जैन जी, जो सीईओ हैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की और एग्रीकल्चर टुडे के एडिटर भी हैं। डायस के बाहर कुछ डिग्निटरीज हैं, प्रोफेसर पी के उपल, फॉर्मर एमडी बिपकोल, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, डीडीजी फॉर्मर एनिमल साइंसेज और अभी साउथ एशिया के इलरी के रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर सिंधुरा गणपति, जो फेलो हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफिस के साथ, जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ काफ़ी काम करते हैं और एनिमल हेल्थ में इनका काफ़ी योगदान है। अब हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुलाटी साहब, फॉर्मर एसीएस एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा, डॉक्टर अशोक कुमार, एडीजी एनिमल हेल्थ आईसीआर, कुछ वीसी लोग बैठे हैं जो आज यहाँ प्रेजेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट के, उनके साइंटिस्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं जो एनिमल हस्बेंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स भी हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जब इस कार्यक्रम की चर्चा शुरू हुई तो खान साहब हमारे पास आए कि किस तरीके से हम किस मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की थी कि क्या हम इस समय एशिया की हेल्थ कंडीशन के ऊपर, क्योंकि हम रीजनल अप्रोच लेके जाने की बात करते थे कि क्या एशिया एनिमल हेल्थ समिट हम कर सकते हैं। हमने वो प्लान किया, लेकिन कोविड के इस महामारी के दौरान हमें थोड़ा महसूस हुआ कि शायद एशिया से वो उतना रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल पाएगा और उस तरीके से फिज़िकल मूवमेंट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हम इसे करना चाहते थे। फिर लगा कि अभी हम जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को एक अलग पहले डिपार्टमेंट बनाया गया फरवरी 2019 में और बाद में इसे मंत्रालय में डाल दिया गया मई 2019 के बाद, तो क्यों ना हम इसके जो पिछले 3 साल में जिस तरीके से इस विभाग ने एक बूस्ट लिया है, जिस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, तो क्यों ना इंडिया एनिमल हेल्थ समिट को इस रूप में लेके जाएं जहां सारे स्टेक होल्डर्स जो भी एनिमल हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकें, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकें, हम कन्वर्जेंस की बात कर सकें और किस तरीके से हम एनिमल हेल्थ को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए कुछ सुझाव, कुछ रिकमेंडेशंस हम पैदा कर सकें इस डेलिब्रेशंस में, सो दैट वी कैन एक्चुअली पुट फॉरवर्ड आवर ओन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट और इसमें हम आगे बढ़ाने की बात करें। खुशी की बात है कि आज ये कार्यक्रम हमारा जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है उसके उपलक्ष्य में 6 जुलाई को हमने आज शुरू किया है। और एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हेल्थ का कंट्रीब्यूशन अगर हम जूनोसिस की टैकलिंग के लिए बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सुबह ही मैं एक मीटिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, जिसमें WHO ने एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी का गठन किया है और उसमें उन्होंने एक आउटलाइन दी है जिसमें या तो वो कन्वेंशन या एग्रीमेंट या किसी तरीके से एक नया इंस्ट्रूमेंट पैदा करना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक होती है तो कैसे उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। और उसमें
हमारे विभाग की तरफ से जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक निकल के आती है कि एनिमल हस्बेंड्री का इस सारे पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में, चाहे ह्यूमन साइड है चाहे वो एनिमल साइड है, अगर हम वन हेल्थ की बात करते हैं तो सुबह भी चर्चा हो रही थी माननीय सचिव साहब के साथ, वन हेल्थ में हम हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें, जिसमें एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ से पूरी होती है। और जब हम एनिमल हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्दी एनिमल्स और जो हमें एनिमल प्रोटीन अच्छे से दे सकें, तो इस उपलक्ष्य में जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया, डॉक्टर खान आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी ऑर्गेनाइजर्स जो इसमें बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इम्पोर्टेंट ये है कि जितने बिजनेस हाउसेज हमारे इसमें काम करते हैं, अभी तक ये एक कंसेप्ट मैं समझ पाया था, पिछले 3 साल से मैं इस विभाग में कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स थोड़ा सा अपने आप को विभाग से या सरकार से थोड़ा अलग देखते थे। वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, कैसे उन्हें सरकार के साथ लाया जा सकता है और कैसे उनको हम उनकी स्ट्रेंथ को लिवरेज किया जा सकता है, जो अभी आईसीआर से डॉक्टर बीएन त्रिपाठी ने बताया, वीसीआई से डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया, हम खुद सरकार से माननीय सचिव साहब, माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे कि हम विभाग से क्या आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी नई स्कीम्स हैं, किस तरीके से हम इस पूरे लाइफ स्टॉक सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनका क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे वो कंधे से कंधा मिला के हमें आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। और ये 2 दिन के जो हमने इसके अंदर कार्यक्रम रखा है, जो अलग अलग सेशन रखे हैं, सबसे पहला सेशन ही बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बात कही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कैसे करें। पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की इसमें बात है। इसमें हम इनोवेटिव अप्रोचेज़ की, जो स्टार्टअप की बात डॉक्टर खान ने कही कि बहुत कम हमारे पास स्टार्टअप हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन फील्ड में बढ़ाया जा सकता है। और हमारे पास हम 2 ग्रांड चैलेंज ऑलरेडी कर चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री से, जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ हम टच में हैं, और शायद उसी के इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से हम उन्हें इंक्यूबेट करने की बात करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करने की बात करते हैं, एनकरेज करने की बात करते हैं कि वो आगे बढ़ें। इसमें डिजिटल सेक्टर में हमारा जो ग्रोथ है, डिजिटल सेक्टर की वजह से जो इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आने की बात है, उसके ऊपर बहुत ध्यान है हमारी सरकार का। इसमें रेगुलेटरी प्रोसेसेस, जब हम पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, जब एनिमल हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं, तो कुछ जैसे आपने कोविड में देखा कि इमरजेंसी रेगुलेटरी अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उस तरह का कोई इकोसिस्टम पैदा कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें अचानक से हमें सामने ना आए, हमारे पास एक सेट मैकेनिज़्म हो कि जिस मैकेनिज़्म के थ्रू हम इसे आगे बढ़ा सकें। हमने इसमें बात की है कि जितने CEOs हैं वो सारे आएँ, मिल के बैठ के बात करें, और इस समिट में ओवरऑल जो 2 दिन का ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, उससे कुछ ऐसे रिजल्ट निकले कि हम इस सेक्टर को कुछ आगे ले जा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आज की जो सिनेरियो है हमारे देश का, हमारे रीजन का, पूरे ग्लोब का, उसे हमें समझना होगा। किस तरीके से डिजीज़ इमर्ज हो रही हैं, और वो खाली जूनोटिक नहीं है, वो हमारे सेक्टर की अपनी ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज़ भी हैं, डिजीज़ ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं, वो किस तरीके से आ रही है। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, जैसे एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, उसमें एंटीमाइक्रोबियल यूज़ और अब्यूज़ की हम बात कर सकते हैं कि क्या हर आदमी की किस तरह की जिम्मेदारी है, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल दीज स्टेक होल्डर्स कैन टेक, कैसे हम जुड़ के अपने इस डाटा को मजबूत बना सकें। एक बहुत मोटा सवाल हमारे पास आता है कि भारत में इतने नंबर की गिनतियां हैं, हमने क्लाइमेट चेंज से लेके एनिमल एंटीमाइक्रोबियल यूसेज के ऊपर हम बात करते हैं, तो जो इंटरनेशनल चीज़ें आती हैं हम उसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं अपने नंबर्स पे। नंबर्स अभी पाठक सर ने बताया कि हम नंबर 1 पे हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा गिनती है, तो नेचुरली जब उसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हमारे पास गिनती भी बहुत आती है। लास्ट ईयर हमने इंडस्ट्री से थोड़ा सा कंधा मिला के रिक्वेस्ट की थी कि कुछ डाटा जनरेट करें, और जो हमारे पास इनिशियल फिगर्स इन लोगों ने हमें दी हैं, उससे पता चला कि हम मुश्किल से पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 12% के करीब हम लिए बैठे हैं, मुश्किल से हम 4% एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये ब्लेम हम डाटा क्रिएट करके ख़त्म कर सकते हैं,
और उसके बावजूद भी क्या हमारे पास इस तरह की गुंजाइश है कि हम इस एंटीबायोटिक मिसयूज़ को या एब्यूज़ को कुछ कम कर सकें ताकि रेजिस्टेंस बर्डन हमारे पास थोड़ा कम हो जाए। हमारा जो मैकेनिज़्म है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का, चाहे वो प्रिडिक्शन से हो या प्रिवेंशन से हो या रेस्पॉन्स मैकेनिज़्म से हो, इनके साथ साथ क्या हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम फार्मर को ट्रेन करें, इस तरीके से ट्रेन करें कि ये डिजीज़ कम से कम हो सकें। तो क्या फार्म सिक्योरिटी की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बायोवेस्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारे पास डेड एनिमल के या कार्कस के डिस्पोजल का मैकेनिज़्म क्या है, हॉस्पिटल के ऊपर हम किस तरह के स्टैंडर्ड्स, अभी मिनिमम गाइडलाइंस की बात डॉक्टर उमेश शर्मा ने कही, नेशनल स्टैंडर्ड्स या एक्रेडिटेशन की बात भी हम कर रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल को हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह के क्राइटेरिया हम इनके साथ बात कर सकते हैं। तो हम ये सब आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्कोप है एनिमल हेल्थ सेक्टर में ही। अगर हम खाली ब्रीडिंग और न्यूट्रिशन को भी साथ में रखें तो कैसे टुगेदर वी कैन एक्चुअली बूस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्टर फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द ओवरऑल लाइवस्टॉक सेक्टर। जो कंट्रीब्यूशंस हमारे अभी हैं उससे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो हमारे पास है उसे कैसे मीट आउट किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के जो डेलिब्रेशंस होंगे ये बहुत ओपन और फ्रैंक और जिसे कहते हैं एक ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ होंगे ताकि हमें बेस्ट रिकमेंडेशंस इससे मिल सकें, और कोशिश करेंगे कि वो रिकमेंडेशंस जो हमारे पास सरकार में आएंगी उसमें हम वो सारी रिकमेंडेशंस जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से खान साहब और ICFA के पूरे मैकेनिज़्म को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much indeed. And now, ladies and gentlemen, we have the privilege in inviting Dr. Schillinger, DDG International Livestock Research Institute, to kindly say a few words. Let's put our hands together to welcome. So, Your Excellency, Minister Parshotthan Rupula, so I have a problem with pronouncing the names, really, and the Honorable Secretary of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Atul Chaturvedi. And I stop here because you will start to laugh when I try to announce other names. So let me first express my sincere appreciation to the honor I have been given to participate the inaugural ceremony of the Indian Animal Health Summit 2022. So I come from the International Livestock Research Institute, which has a headquarters in Nairobi and in Addis, but we have 14 offices in other countries in West Africa, Southeast Asia, but that's very good also in South Asia. And I'm very happy to be here and visit after a long time our office in Delhi, and which is in good shape because Dr. Raman kept control about it. I'm a livestock veterinarian, so let me give some figures. And I have to apologize because most likely some of the things I want to say were said, but I don't know if they were said. So just let me know if I'm duplicating things. So I would like to start by saying a few words why livestock matters. And really, if you look, and I've heard there was some mentioning of the livestock contribution to the agriculture GDP, which is overall 40%. But if you look at countries, some countries in the developing world, it goes up to 70 to 80%. An example here is Ethiopia. But important is also that under the global value food commodities, under the first 10, there are 5 livestock products. So it shows the importance in terms of economy of this product. So number 1 is rice, but it's followed in rank 2, it's already pork, then it's milk, then it's beef. Chicken is in rank 6, and eggs are on the rank 9. If you look at the growth in demand of livestock products, it is mainly only happening in low and middle income countries.
You know, in Europe, there's already a reduction in demand of livestock products, but it's increasing very much in the low and middle income countries. And examples for South Asia, if you look, these are data between 2005 and 2030, milk will increase by 70%, pork by 80%, and poultry by 350%. So these are enormous growth figures. So then who is meeting this demand? And in most of the low and middle income countries, the demand is met by smallholder farmers. They are doing the job. If you look at US, there are only 8% of the smallholder farmers are contributing to the food supply. In Europe, it's about 30%, but if you look at sub-Saharan Africa, it's 72%, and if you look at Asia, it's 75%. But we have also the problems with the livestock sector, and this is particular meat, greenhouse gas emission, animal welfare, all the stories. But if you look at meat, the OECD says that in 2018, the average consumption of meat was 69 kilogram per capita per year. In North America, it's between 100 and 120 kilogram per capita per year. And if you look at an example, sub-Saharan Africa, it's 10 kilogram per capita per year. But still, this developed countries tell the developing countries they should reduce the intake of meat. But we know how important animal source food is for balanced diet, and particularly for children. You know, it's very important to have milk, eggs, and meat. Greenhouse gas emission is really a problem, and we in Nairobi, we have the reservoir chambers, and we do a lot of measurement on greenhouse gas and methane emission in local cattle, and it's very, very low compared with the greenhouse gas emission in the intensive farming. However, if you do a calculation on kilogram milk, an example, the greenhouse gas emission is 60 times higher. So it shows we need to improve the productivity. And it was said before, to increase the productivity, we need good animal health, we need good feeding, and we need the right livestock genetic adapted to the climate change, which is affecting us already. Short words to the, I'm a veterinarian, to diseases. You know, we struggle a lot with transboundary animal diseases. Particular African swine fever is a problem, and I'm attending a meeting on Friday in Assam on African swine fever, and it's a problem in most of European countries already, and we know China, where the largest pig production, the pig population was 500 million. 100 million of these pigs died because of, or needed to be culled because of African swine fever. We have a lot of tools, vaccines, diagnostic, but still, I think everything struggles with the policies for transboundary animal diseases, and the cooperation between the countries from one country to the other country are different policies, and that makes it difficult to control the disease. Another issue with all the animal diseases is we don't know really the burden of the disease. So the cost, the burden, which is not known. So the OIE, which is now the World Animal Health Organization, in short, it's now called WOA and not OIE anymore. So they have set up a global burden of animal disease task force, which is led by Liverpool. We are part of it, and they should find out a systematic approach how we can measure the global burden of animal diseases, which then is guiding decision for the decision makers, what is actually the next step to do and what are the priorities countries. When we talk about One Health, pandemics, the big opportunities exist to reduce the threat of pandemic diseases via livestock interventions. And that's not understood all of the world. Better animal disease surveillance
could save billions of dollars stopping diseases, outbreaks in animals, and not wait until they have ended up in people. But, you know, if we see that One Health, which is used for everything currently, is a buzzword. Even if it's not One Health, people talk about One Health, not knowing what it means. And everybody who uses it has a different definition. And I'm very happy that the quadripartite, I know you have heard about the tripartite, but now it's a quadripartite, which is the WHO, FAO, WOA, and the UNEP. And they have really tasked One Health's high-level expert panel to find a good definition for One Health. And I like this definition very much. And I just read it here. One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals, and ecosystems. So that's what it is, and it's not everything else what people put there. You can find it on the OLEP on the website. So today, and I think that was said already today, it is the World Zoonotic Day. A very important part of the One Health is controlling the zoonotic diseases. And, you know, the term goes back to Rudolf Virchow. He was a medical doctor working in the late 19th century in Berlin, in Germany, and he coined the term zoonosis because he realized that diseases and health between animals and human beings, there is only a very, very small difference. So he realized how close these things are, and this started the One Health initiative and the discussion on zoonotic diseases. There are the epidemic zoonotic diseases everybody talks about, but I think it's very important to look at the endemic diseases. And if we go to funders, they have no interest in funding endemic diseases. If you see brucellosis, 1 of 10 cows in the developing world is still brucellosis positive, with the consequences for the human being. Food safety is the other issue. So the WHO realized that the burden of food safety is comparable to the most important infectious diseases in humans, which are tuberculosis, malaria, and HIV. Even that is important to show. And we all talk about informal markets and wet markets. After Wuhan, everybody wanted to close these markets, but we have to see 80% of the products which are produced from smallholder farmers are finally sold on informal markets in rural, and it's very important for poor rural people and poor urban people. So we have to transform these markets, we have to improve them, and that's the job we have to do and not close down the things. So I think and then AMR, I think there was a lot of that said already, the silent pandemic. I think we realize, I was just coming from a One Health presentation in Europe, and in Europe it was possible over the last 10 years to reduce the antimicrobial or the antibiotic consumption by 50% over the 10 years. But this was possible because we had the data. The pharmaceutical industry and the farmers and the veterinarians have to document for what they use the antibiotics and how much they use and what antibiotics use. Here in the developing countries, we don't know the source of the antibiotics. We have no idea how long they are used. Is this done in a proper way? So it's misuse and it's not overuse. And people always talk about overuse, but in these countries, it's a misuse because of lack of knowledge. So I'm just coming to the end. I just would like to give another figure which is so important for One Health. There's an estimation done. If you invest $25 billion over 10 years in One Health, you will generate benefits of $125 billion. That means $1 invested in One Health will give you a benefit of $5 later on. What do we do still? We try to fight the disease at the end and not at the beginning, and that's bad. So I think we are all agreeing
that we have a common destination. The common destination is to have a sustainable livestock production, wherein the focus is the healthy animals, the healthy people, and the healthy environment. Thank you. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege in inviting Secretary Department of Animal Husbandry and Dairying, Shri Atul Chaturvedi ji. Let's put our hands together to welcome. Good afternoon, namaskar to all of you. Already there have been a number of speeches. I'm sure you all must be tired of listening to speeches from now on. First of all, हमारे देश के फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्री श्री रूपाला सर, the Deputy Director General of AILRI, who's here in midst of us, I welcome him as well, and all the dignitaries on the dais and off the dais who are present here today, and ladies and gentlemen, and all the people who have joined in online, as mentioned by Dr. Malik, that there are a number of people who have joined in across the country online. Already 21,000. Yes. So 21,000 people who are connected with us across the country. I welcome all of them to this unique Animal Health Summit. And I would like to thank the organizers who have taken this initiative to do this first Indian Animal Health Summit. And I'm sure it'll grow as we go along. So I would like to thank Dr. Khan and Mamta and the whole team of the ICFA who have put in the hard work to organize this particular Animal Health Summit, which is a very important topic as on today. In fact, when the whole world is talking about One Health, the animal health is a very important aspect of that. And somehow, when we talk of One Health, we tend to confuse with only the zoonotic diseases. And we think about One Health as the aspect in which we need to address the issues of zoonotic diseases, but that's not the case. If we want to have One Health in the country or in the world, we have to talk about the health of the animal. And animal health is not only about the zoonotic diseases as such, but even all the other diseases which are affecting the animal. In fact, if we get down to some of the statistics, just the 4 diseases which are affecting the world, which is the African swine fever, FMD, lumpy skin disease, and the bird flu, is itself causing huge loss of almost around $400 billion annually to the economy of the world. So that's the number we are looking at, and in case we look at in the country, in our country, we say that it's around $4 billion plus impact on the economy, but by just these 4 diseases of FMD, African swine fever, lumpy skin disease, and bird flu. So that's the kind of impact we are looking at in terms of the animal health issue which we need to address. In fact, there were some statistics were thrown about the contribution of livestock sector. In fact, if we look at India, the contribution of livestock to the GDP of the country is around 5%. And the contribution of livestock into the agriculture and allied sector GDP over the years are increasing. And if we look at the compound annual growth rate of the livestock sector, it's growing since 2014 at the rate of around 8% or so, while agriculture grows around 2% and the manufacturing and the service sector grows around 4 to 5%. So livestock sector alone is contributing annually to 8% growth and contributing in a big way to the economy. In fact, it is known as the ATM of the farmer, because whatever working capital he puts in at the beginning of the day, he gets a result or the output or outcome at the end of the day. So that's a kind of importance this sector has for the farmer. In fact, there have been studies which have been carried out that any agriculture farmer who's also a livestock farmer
never resorts to suicide as far as the statistics goes in terms of the suicide rate among the farmers are concerned. Well, coming on to the health aspect, the most important issue which has been also mentioned by the previous speakers is the thrust of our Honorable Prime Minister towards the disease burden on the animal health part is concerned. In fact, if we start counting the directions and the policy decisions which have been taken under the direction of the Honorable Prime Minister and under the guidance of our Honorable Minister who's present here, it goes on, the list is very long, starting from the issues related to FMD and brucellosis, where we started a National Animal Disease Control Program with almost 13,000 crore budget. In the first cabinet of the NDA 2, where this decision was taken, and we started the vaccination program with 100% funding from Government of India for FMD and brucellosis for all the species which gets infected by this particular disease. And the way we are going around implementing this particular program, we are now into very intensive quality checking of this particular vaccine which is being deployed on the ground. And it is already showing the results because the quality testing was not done earlier in the FMD program. And with this quality testing inputs which are coming in, the sero surveillance data are showing tremendous improvement in terms of the immunity levels of the animals to the FMD, and we are soon going to be getting on to the vision of the Honorable Prime Minister of controlling this FMD disease and making India free for FMD, which is a major burden as far as affecting the export of the livestock products from our country. And once we have these compartments and zones which are FMD free, we can freely export out of these, and the trade can happen out of these areas, and which will give a huge push in terms of both the exportability of the products as well as for the income of the farmer, which we are talking about in terms of doubling or tripling or even quadrupling the income of the farmer. So this is the one big program which was started, followed by the critical animal disease program which got announced in August last year, where we are now not only giving 100% Government of India assistance for FMD and brucellosis, but we have also extended this to the critical to the classical swine fever and to the PPR vaccine as well. So these are the other two diseases on which 100% Government of India assistance is now being given, and we are going around doing the carpet vaccination as far as the PPR part is concerned, which is soon going to start. The other important initiative which the Honorable Modi's government has taken is the issue which was also mentioned by some of the previous speakers, is about the quality veterinary services at the doorstep of the farmer. And this has been made possible with the announcement of the mobile veterinary dispensaries for every 1 lakh livestock population in the country. And we have already in the last financial year we have already sanctioned 4,000 plus mobile dispensaries across the country in all states. In fact, this was the program which the Honorable Prime Minister, when he was Chief Minister of Gujarat, started in Gujarat for mobile dispensaries, and that is now has been taken to a national level under his leadership, and the announcement made under his guidance by this department. And this is one program which is going to make a huge change as far as the quality veterinary services and the doorstep delivery of this particular program is concerned with reference to the animal health. The other aspect is about the quality of doctors, which we are talking about. Dr. Umesh Sharma mentioned about number of initiatives which are being taken by the Veterinary Council of India and number of other things which are being done. I'm sure what we need is the respect for the veterinary doctors, which we need to introduce
Because somehow, as the Honorable Minister just now was mentioning, that we need to upgrade the status and the level of the veterinary doctor among the community at large, because the way we look at the human doctor, probably we don't look at the same way to the veterinary doctor and the veterinary profession. We need to continuously upgrade, and that's where the issue of One Health comes in very importantly, because One Health cannot be achieved unless you have a perfect animal health and perfect wildlife health. Because the number of diseases which are impacting the human health aspect is due to the animal health and the issues related to zoonosis, which is making a huge contribution. So therefore, unless you have a good animal health doctor, unless you have good animal health facilities on the ground, the One Health cannot be achieved, and therefore the importance of the veterinary doctor becomes several-fold in terms of controlling and impacting the economy of the country. As I mentioned, just the 4 diseases itself have the huge impact of $4 billion plus US in our country itself to the losses which are incurred in a year. So therefore, the quality of doctors and the quality of hospitals and dispensaries and the mobile facilities which we are trying to create. So all this is very important, and one of the issues, in fact, which was not directly connected, but then we are now under the guidance of our Honorable Minister, we are now trying to also ensure that all these hospitals and dispensaries have toilets, because when this was brought to our notice recently in one of the conference where we found out that the number of dispensaries and toilets, dispensaries and hospitals were not having toilets, and in fact now, along with the Department of the Drinking Water and Sanitation, and along with the Ministry of Urban Development, we have issued a joint advisory to all states, which has been signed by me as well as by the Secretary of the Drinking Water and Sanitation, who is in charge of the Swachh Bharat, where we have said that the Finance Commission grants which are available to the local bodies can be used for constructing these toilets in the states. And we request all the doctors and the states in charge who are today connected with us to please avail of this funding and submit your proposals to the urban local bodies or the PRIs in your state to get the funding for construction of these toilets, because that's the very basic thing which we need to ensure that we have the quality service delivery of the veterinary services across the country. The other important aspect is about the whole R&D and extension activity. We are giving a lot of emphasis on the R&D and extension activity. In fact, we are trying to build on the existing social capital which is existing across the country. Now, what do I mean by social capital is the national livelihood mission across the country, which is being under implementation. There are community-based workers called Pashu Sakhis and all. They are social capital for you. Similarly, the PRIs, functionaries across the country are social capital for you. The KVKs are social capital for you. The common service centers, 4 lakh plus common service centers are social capital for you. And such similar things are social capital. We must capitalize on these social capital available with us and use them for extension activities across the country to make farmers know about various benefits which are available and various issues which needs to be addressed with reference to either health or breed improvement, etc. So we have started funding this existing infrastructure instead of creating a new infrastructure for extension activity, and that's where we need to emphasize more and more as far as the R&D and extension part is concerned. The other aspect which we are now giving a lot of emphasis is on the pandemic preparedness, which Dr. Malik briefly touched. So what we are trying to do, in fact, tomorrow I'm going to be making a presentation before the Prime Minister's Science and Technology
Innovation Council, which is headed by the Principal Scientific Advisor, where we are going to be talking about the animal pandemic preparedness and what we need to do as far as that is concerned. And we are trying to basically address 4 or 5 pillars of that. That is basically the surveillance part of it, the early warning part of it, the ecosystem coordination part of it, and vaccine development and regulatory system part of it, which we need to develop in this whole canvas and ecosystem. And that's where we have also started several pilots on the National Digital Livestock Mission, combining it with the health as well as with the breed improvement. So what in the human health aspect is the National Digital Health Mission, which was announced by the Honorable Prime Minister a couple of years ago, is this National Digital Livestock Mission is the National Digital Health Mission plus, where we are not only looking at the health of the livestock, but also the breed of the livestock, the breed improvement, the whole nutrition, and thereafter the whole traceability aspect with reference to the livestock products. So this is the system which we are working on. We have certain pilots going on right now in state of Uttarakhand and state of Karnataka, and we are soon, based on the experience out of these pilots, we are soon going to be launching a national level mission, which is going to be a very I will say a very aspirational goal for us, because this is something which has not been tried anywhere else in the world in such a large scale and such a huge livestock population which we have in our country. So therefore, this is another area which we are going to be giving a lot of emphasis, which is on the pandemic preparedness, because a lot of work has been done on the human pandemic preparedness, and especially with post-COVID, there have been a lot of development in that area. But similar steps need to be taken on the pandemic preparedness as far as the animal diseases are concerned, because if we don't address that, this can assume a very large-scale losses, not only to the country's economy, but to the farmers at large, which are affected because they are the keeper of the livestock in our country. So these are the issues which we are trying to address. I just wanted to give you certain flavor of what we are trying to do under the leadership of our Honorable Prime Minister and under the guidance of our Honorable Minister, who would now be also speaking to you in detail about all these issues which we need to address. I would first, once again, like to thank the organizer for taking this initiative, and I'm sure whatever is being debated over the next 2 days would help us in improving our delivery services across the country as far as the animal health issues are concerned. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, for those valuable inputs. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege in requesting our Honorable Minister to do the honors of launching India Animal Health Forum 2022. May I invite all the members to join us on the dais for the launch? Inviting Dr. Praveen Malik, Dr. Sunil Gulati, Dr. Tarun Sridhar, Dr. Umesh Sharma, Dr. Ashok Kumar, Dr. B.N. Tripathi, Dr. Habibur Rahman, Dr. P.K. Shukla, Dr. K.M.L. Pathak is already here, Dr. N.H.K. Lawala, Dr. Indrajit Singh, Dr. Ashish M. Paturkar, Professor Vinod Kumar Verma, Dr. Santosh Deshpande, Mr. Amit Vyas, Dr. Arun Atre, Dr. Anup Kalra, Dr. Neti Patel, Dr. Ikshit Sharma, Mr. R.S. Dikshit, Mr. Manish Jain, Dr. R.K. Singh, Mr. Aseem Rawat, Dr. Jyoti Mishri, and Mr. Saurabh Singh. I would also request the Honorable Minister to release the July edition of Agriculture Today on animal health.
It is being also released on the digital platform. And please put your hands together on the release of the Agriculture Today, July edition, which is on animal health. माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने दिशा निर्देश के साथ एनिमल हेल्थ पर कुछ शब्द कहें और उपस्थित सभा का मार्गदर्शन करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। Indian Animal Health Summit 2022 इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर विराजमान हमारे विभाग के सचिव महोदय आदरणीय चतुर्वेदी जी, हमारे कमिश्नर श्रीमान मलिक जी, श्रीमान शर्मा जी, पाठक जी, डॉक्टर जोसेफ सिलिंगर, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीजी जी, हमारे खान साहब जो इसी पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, और बहन ममता जी, और बहुत ही विद्वत जन हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ही सीनियर और ख्यातनाम हस्तियाँ इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए आए हैं। उन सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। राज्यों से आए हुए और इस विभाग में काम करने वाले साइंटिस्ट और वेटरनरी डॉक्टर, स्टूडेंट्स और सभी लोगों को, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत और धन्यवाद है। मैं ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम के आयोजन के लिए खान साहब को बधाई देना चाहता हूं, इस विभाग के मंत्री के नाते, कि ये एक बहुत ही समय के अनुरूप आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज इस सेशन के बाद एक डिस्कशन का सेशन आज का भी है, और कल 6 सेशन है, और इनकी विविधता को देखते हुए इस प्रकार का विचार मंथन पहली बार हो रहा है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ICFA के द्वारा लिया गया है, इसका स्वागत है। अब यहाँ इतने विद्वत जनों की बातें हो गई है, सो अपना कंट्रीब्यूशन, फिगर्स और वर्ल्ड लेवल उसका कंपैरिजन, वो सारी चीज़ों में अभी मैं जाके आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं आपको 2-3 चीज़ों पे ये सेमिनार में आप डिस्कशन करने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए कुछ बिंदु मेरे मन में बैठे बैठे आए हैं, वो शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे सचिव महोदय ने जो बताया कि ये हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स जो है, पशु चिकित्सक जो है, उसका सोशल दर्जा हमें बढ़ाने के लिए कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तभी जाके इसका गरिमापूर्ण काम बनेगा और हेल्थ के बारे में हम कुछ आगे बढ़ने की बातें सही मायने में कर सकेंगे। हमारे गुजराती में ढोर डॉक्टर बोल देते हैं, उसको तो सरेआम बान करना पड़ेगा। मैं ये बात पशु चिकित्सकों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरा कन्विक्शन है। हमारे मनुष्य के लिए जो डॉक्टर्स हैं, उनके सामने तो हम हमारी बात रख सकते हैं, हम बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, बाद में हम नेगोशिएट कर सकते हैं,
मगर आपके पशु जो आपके सामने आता है वो तो आपसे नेगोशिएट नहीं कर सकता। उसी को बेजुबान की उसकी देखभाल करना और उसी को समझ के उनका सारवार करना, मैं मानता हूं कि वो मानव डॉक्टर से भी कठिन काम है, वो आप कर रहे हैं। ये मेरा कन्विक्शन है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब ये पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान आगे इसके लाइन में बिठाने का हमें काम करना चाहिए। और मैं इस विचार मंथन करने वाले लोगों को इस बिंदु पर हमें क्या करना चाहिए उस पर हमें सुझाव दे, ताकि मेरा विभाग इसका इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। वहीं से हमें शुरू करने के बाद अभी तो सारी दुनिया को समझ में आ गया है, ये वन हेल्थ जो निकला है ना वो ऐसे नहीं निकला है, वो कोरोना ने कान पट्टी पे रख दिया ना इसीलिए निकला है। अब सभी को पता चल गया कि वो जो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ स्वाइन फ्लू की जो बात हुई, कुछ नहीं कर सकते, बस उसको हुआ है उसको मार दो, नहीं हुआ है उसको भी मार दो। तो ये तो कोई सारवार होने की तो बात है ही नहीं। तो वो कहीं से ये अभी उसमें नाम है, ये अगर इधर आएगा तो फिर किसको मारोगे। सो इसीलिए अब हेल्थ का डिस्कशन जब भी चर्चा प्रारंभ होगा तो वो एनिमल के स्वास्थ्य के साथ ही शुरू करना पड़ेगा, ये बात अब तय हो गई। और ये सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। वन हेल्थ मतलब ऐसे थोड़ी गिर के बोलेंगे कि हमें पहले पशु का नाम लेना पड़ेगा, वो अभी जचेगा नहीं। मगर अब इनके पास चारा नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें अब चलेगी। और भी कई डेवलपमेंट हो रहे हैं इस दुनिया में। अभी जग्गी जी ने एक यात्रा निकाली, सदगुरु जी ने 30,000 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली पूरी दुनिया में। उसका टाइटल था सॉइल सेव सॉइल। अब क्या है, वो तो क्वेश्चन है सेव सॉइल, उसका जवाब किसके पास है। वो पूरी दुनिया में चक्कर काट के आए, किसी ने कहीं से भी ऐसा नहीं कहा कि भी ये मेरे देश में सॉल्यूशन है लेके जाओ, ऐसा वहाँ उनको कहीं पे नहीं मिला है। वो उसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, ऐसा मेरा बहुत विनम्र मंतव्य है। इसका जवाब अकेली हमारी इंडिजिनस गाय माता के गोबर में है। तो अब ये भी मान के चलो कि फिर से गाय माता केंद्र में आने वाली ही है, लोग माने या ना माने। क्योंकि यदि जमीन का कंटेंट खराब हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगी, तो कोई चावल और गेहूं किसी फैक्ट्री में बनने वाला नहीं है, वो तो खेत में ही पैदा करना पड़ेगा। और उस खेत को जिंदा रखने के लिए सिवाय गाय के गोबर के अलावा और कोई चारा नहीं है। सो फिर से इस दुनिया के इस फूड सिक्योरिटी के सवाल के जवाब देने के लिए भी गाय माता के आशीर्वाद से ही बात शुरू करनी पड़ेगी। सो ये भी एक नए सिरे से फिर हमारे पुरखों ने माता जी ऐसे ही थोड़ी कही होगी, ये तो हमारी कमजोरी थी कि हम इसको जोर से नहीं बोल पा रहे थे। अब जब दुनिया बोलेगी तो हम जरूर कहेंगे, हाँ हम तो इनको गौ माता कहते हैं, 33 कोटि देव इसमें रहते हैं, अब कहेंगे। पहले तो लाठी मार के निकाल रहे थे। अब गोबर का एक्सपोर्ट हो गया, आपने न्यूज़ सुना होगा। अब गोबर का एक्सपोर्ट, अब वो सही ढंग से यदि बैठ गया। मैं एक कार्यक्रम में पिछले दिनों यहाँ गया था फरीदाबाद में, वहाँ की एक महिला एंटरप्रेन्योर है, उसने गाय के गोबर में से ऑयल पेंट बनाया है। उन्होंने सरल भाषा में मुझे बताया कि 1 किलो गोबर से 2 किलो ऑयल पेंट बनता है। वो तो जल्दबाजी में बोल गई मैं तो 40 किलो तक गोबर की कीमत देने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा मत बोलो, ये भड़क जाएगी बात। अब सिर्फ इनका गाय का ऑयल पेंट ये यदि सरकार इतना कर देगा, हमारे सरकारी महकमे में इनके अलावा हम कोई ऑयल पेंट को यूज़ नहीं करने देंगे, कल से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं पे गाय मिलेगी नहीं। और ये सब चीज़ होने को जा रही है, वो हम चाहे नहीं चाहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जैसे
वर्षा ऋतु है, अब आ रही है, अभी शुरू ही हो गया है, तो बारिश आएगी ही। इसमें फिर हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी लेजिस्लेचर वाले इकट्ठे होकर करे कि भाई हम सर्वसम्मति से कहते हैं कि हमारे राज्य में बारिश शुरू हो, हम इसको स्वागत करते हैं। ऐसा उनको वेलकमिंग की जरूरत नहीं होती है, वो आ ही जाती है, वर्षा ऋतु आ गई है। ऐसे ही गाय माता का समय आ ही गया है, तो वो अपने फिर से दुनिया को अपना आशीर्वाद देने के लिए रेडी हो गई है। अब इसका स्वागत करने के लिए इस विभाग के नाते हमें और वेटरनरियन के नाते आप सबको तैयार होना चाहिए। उसी के आधार पर हम अब नए आयाम से हमें सोचना ही होगा, ये सारा होने वाला ही है और बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें धरती पर उतरने की संभावना हो रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम पशु के हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब उसको हमारा क्या होता है कि हम पशु माने गाय, पशु माने भैंस, दूध माने गाय का दूध, गाय दूध माने भैंस का दूध, उसी पे अभी सीमित रहने का टाइम नहीं है। अभी सारे पशुओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और नॉन काऊ, नॉन बफेलो दूध का भी एक बहुत बड़ा आयाम हो सकता है, उसके बारे में भी खान साहब आपको सोचना पड़े। कैमल के दूध में बहुत मटेरियल है, गधे के दूध में बहुत सारी वो मेडिसिनल वैल्यू है उनकी, आज सबसे कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। बकरी के दूध में कई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। और तो इस दूध के बारे में भी एक ये जो अभी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है ना, ऐसा एक नया कारोबार खड़ा होने की संभावना है। उसी दिशा में भी हमें ये सोचना चाहिए और इसी दिशा में हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें पशुओं के बारे में जब सोचते हैं तो उसी के साथ पशुपालकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर हम बोल देते हैं किसान, और हमारा ज़्यादातर वो फोकस भी वही है। तो किसान और पशु वो भी एक जोड़ी है, और खेती और पशुपालन वो भी एक जोड़ी है। मगर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसके पास खेती नहीं है मगर पशुपालन कर रहे हैं, जिसको मालधारी शब्द से हम पहचानते हैं। और पास्टोरल कैसा कोई अंग्रेजी शब्द है, पास्टोरियल, हाँ पास्टोरलिस्ट। सो हम तो इसको भरवाड़ बोलते हैं, और अच्छा नाम इनका मालधारी है। और मालधारी जो है वो गिरधारी शब्द के ऊपर से आया हुआ है। गिरधारी श्री कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ इसका शब्द है, और मालधारी पशुपालक के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। मैं मानता हूं कि मालधारी वो गिरधारी का बड़ा भाई है। उसी एंगल से हमें इस एरिया में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा तबका है जिनका एड्रेस ही नहीं है अभी तक तो हमारे पास। ये बड़ा, सबसे बड़ा जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे पास पशुओं में हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐड रखने वाले देश में से हैं, मगर उनमें से ज़्यादा ऐड रखने वाले जो है उनका एड्रेस नहीं है हमारे पास। ये लोगों का एड्रेस ही नहीं है, उनका घर ही नहीं है, वो तो घुमंतु है। सो अब उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, और उनके बारे में दो एंगल से हमें सोचना पड़ेगा। एक उनकी खुद की जिंदगी के बारे में, वो जो लोग घूम रहे हैं उनकी लाइफ का क्या, उनके एजुकेशन का क्या, उनके हेल्थ का क्या। जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद हेल्थी नहीं होगा तो वो बेचारा औरों के हेल्थ में क्या बारे में क्या करेगा। और फिर उनके पशुओं के हेल्थ के बारे में क्या। हमारे भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे सचिव जी ने और हमारे मलिक जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, मगर क्या हमारा मॉनिटरिंग उस तक पहुंच गया है? जो घुमंतु लोग अपने पशुओं को लेकर कहीं से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, एक विस्तार से दूसरे विस्तार में चले जाते हैं, पहाड़ियों पे चले जाते हैं, फिर सीजन बदलने के बाद वो मैदान में आते हैं। ये सारा हमारे देश में एक प्रकार से रूटीन में चल रहा है। सो इन सबको भी अब जान पहचान करके उन सब के साथ भी तालमेल करने का, और ऐसे कॉन्फ्रेंस में उनके भी प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए हमें। उस दिशा में भी हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। ये डेयरी फार्मिंग जैसे क्या है कि आज वो लाइट में है और सिक्योर भी है, और उसको सर्विसेज भी मिल रही है और मुनाफा भी मिल रहा है, मगर उन लोगों को सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो उसी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए।
ये वैक्सीनेशन और MUV, मैं मानता हूं कि हमारे मोदी जी के बारे में जब भी चर्चा होगी, सो अभी तो वो विश्व नेता के रूप में एस्टैब्लिश हो गए हैं। अभी इनको कोई वो ऐसा नहीं है दुनिया में कि मोदी जी के बारे में विश्व नेता से कोई छोटे लेवल की बात कर सके, वो अब हो गया। अभी तो उस मुकाम पे मोदी जी ने अपने देश को और देश के साथ साथ खुद को पहुंचा दिया है कि यदि विश्व में मानव सर्जित या कुदरत सर्जित कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो आवाज लगाने की जगह कहाँ है। ये कोरोना जो हो गया उसमें किसी महासत्ता ने ये स्टेटस नहीं पाया कि वो किसी महासत्ता ने जाकर किसी देश की मदद की हो। लॉकडाउन हो गया, सब अपने अपने घर में, कोई बाहर नहीं निकला। मैं मंत्रिमंडल में हूं मोदी जी की इसलिए नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के कई देशों को दवाई और वैक्सीन पहुंचाने का काम उसी लॉकडाउन के पीरियड में। उस समय वो लोग नहीं आ सकते थे, उनके नागरिकों के लिए दवा लेने के लिए वहां का वाहन नहीं आ सकता था। उस समय हमारा वाहन वहां जाके एयर इंडिया ने उनको दवाई पहुंचाई। ये काम करने के बाद इस दुनिया में एस्टैब्लिश हो गया कि ऐसा मौका लगे और आवाज लगानी है तो उसको सुनने वाला अकेला देश है, उसका नाम भारत है। और अगर कोई मदद करने वाला नेता है तो उसका नाम मोदी है। सो अभी ये हो गया है, तो इसी के चलते अभी ये बहुत बड़े बदलाव की ओर देश जा रहा है। उसी समय ये सारी घटनाएं मैं इसलिए जिक्र किया कि ये सारी बातें मोदी जी के साथ जुड़ेगी, मगर मैं ये अहमियत देता हूं कि मोदी जी के कालखंड में उन्होंने इंडिजिनस हमारी पशुओं को संवर्धन करने का डिसीजन लिया, उन्होंने वैक्सीनेशन कराने का डिसीजन लिया। ये कोरोना की वैक्सीनेशन से 1 साल पहले देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में कोरोना की वैक्सीन का निर्णय हुआ है, वो इनका चर्चा नहीं है क्योंकि ये पशुओं की है। वो हमारी आएगी नहीं आएगी, कौन बनाएगा कौन लाएगा, उस पर बड़ी डिबेटें हुई। और इसको तो भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, वो ले लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, वो सारी चीजें चली थी। और अब सब लाइन में लग गए हैं कि पहले मेरे परिवार को दीजिए, वो अलग चीज है, मगर फिर भी ये आदमी के लिए थी, इसलिए इनकी इतनी बड़ी वो है। मगर इसके पहले 1 साल देश के पूरे मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है। देश के पशुओं के लिए इतना निर्णय करना, और ये MUV मोबाइल वेटरनरी यूनिट, एम्बुलेंस फॉर एनिमल, ये होता ही नहीं था कहीं पे, सोचा भी नहीं था किसी ने, और किसी की डिमांड भी नहीं थी। मुझे इस कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जो सेवाभावी लोग थे वो बेचारे घूमते रहते थे, क्योंकि वो मुझे मिले हुए थे, इसलिए मुझे उनका पता था कि ये इसके बारे में सर कुछ करना चाहिए। हमने हमारे लिए एम्बुलेंस बना ली थी सबसे पहले, क्योंकि हमें ज़रूरत है। उनको कौन पूछने वाला था, मगर उनकी भी सुनने वाला उनकी भी तकदीर में होता होगा। इसलिए मोदी जी ने वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश के लिए भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय लिया। ये दोनों निर्णय में जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना नया भारत, मैं मानता हूं कि इस नए भारत का सबसे अहम निर्णय वाला ये दोनों डिसीजन मोदी जी के द्वारा लिए गए। अब इनके इस्तेमाल से अभी राज्य सरकारों की ओर से मुझे निमंत्रण मिलने लगे हैं। मैं कर्नाटक जाके आया, और अभी केरला वालों ने भी मुझे निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैयार हो गए हैं, आप आइए तो इसको लोगों के लिए वो करें। वो अभी सारे राज्य आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब ये सर्विस उनके डोर स्टेप तक पहुंच सकेगी। अब हम बातें कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, हमारे ब्रीडिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं उसी भी दिशा, मगर वो हो कैसे सकता था। वो पशु कहीं पे दूर है, उनका पशुपालक कहे तो किसको कहे, वो जब हिट में हो तब उसका इंसेमिनेशन करना होता है। अब वो हिट में हो तब वो किसी को पुकारता रहे, कोई मिलता ही नहीं था।
अब वो एम्बुलेंस की वजह से ये कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और वहाँ डोर स्टेप डिलीवरी होकर उसके घर पे जाकर उनको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकोगे। सो इनसे एक बहुत बड़ा बदलाव, उसका सक्सेस रेट बदल जाने वाला है। सो ये सारी चीज़ें अब आने वाले दिनों में हमारे देश में होने को जा रहा है। एक विचार मेरे मन में ये भी आ रहा है खान साहब कि जैसे अभी ये आयुर्वेद के बारे में भी बहुत प्रचलन शुरू हो गया है और आयुर्वेद को दुनिया ने, भारत को मान्यता दे दिया और WHO ने हमारे जामनगर के आयुर्वेद सेंटर को एक प्रकार से मान्य करके अब ये बात मान ली गई कि अब आयुर्वेद में भारत कहेगा वो दुनिया को मानना है, ये बात तय हो गई। सो आयुर्वेद का उपयोग हमारे इस पशु चिकित्सा में भी कैसे हो, इसका भी अभी इसमें भी थोड़ी और ताकत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी परंपरा ये हमारे यहाँ है ही। अभी ये जब वेटरनरी डॉक्टरों की उपलब्धि बढ़ी और अभी थोड़ा बहुत अच्छा उसमें काम हो रहा है, उसकी बात नहीं करता हूँ, वरना पहले हमारे देहातों में पशु को कुछ होता तो किसान भरवाड़ को ही बुलाते थे। वो भरवाड़ आके उसको कुछ पिला खिला देता था, धूप धुआड़ा दे देता था और उसी को ठीक कर देता था। तो वो उसी के पास भी वो ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं अब उसको नए सिरे से फिर से अपनी इस प्रणाली में शामिल करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। और मैं एक विषय को लेकर कोशिश कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आप बिजनेसमैन होने के नाते और आपका इसमें बहुत अनुभव है और इसके लिए मैं एक विषय यहाँ छेड़ना चाहता हूँ कि हमारे इस हेल्थ के, एनिमल हेल्थ के जो एरिया है टोटल, उसमें दो ही अभी हमारी सिस्टम चल रही है। एक तो हमारी गवर्नमेंट है या प्राइवेट, और प्राइवेट जैसी हमारे मनुष्यों के लिए है उतनी प्राइवेट इसमें कम है, मगर सरकारी या प्राइवेट दो ही अभी है परंपरा, छोटी मोटी कुछ भी होगी तो होगी, मगर कोऑपरेटिव इसमें नहीं है। और कोऑपरेटिव और कामों में बहुत लगी हुई है, वो मिल्क में बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव हैं हमारे पास, मगर वही वहाँ हमारा एनिमल हेल्थ में कोऑपरेटिव नहीं है। यदि इनका सही तरीके से कोई मॉड्यूल खड़ा किया जाए तो जो अभी कड़ी मिस हो रही है उसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और एनसीडीसी ने कोऑपरेटिव हेल्थ के लिए फाइनेंस करने का अपने पास जो वो भी करके रखा है, जो हमारा कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करने की संस्था है उनके पास कोऑपरेटिव को हेल्थ में सपोर्ट करने का उसने प्रावधान करके रखा है और 5,000 करोड़ रुपए की उसके पास पूंजी भी है। अभी विषय नया है, मगर यहाँ हम सारे इनके साथ जब बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इस विषय पे भी थोड़ा फोकस डाला जाए तो मुझे लगता है कि वो आगे चल के हमारे इस सारे कार्यक्रमों में उपयोगी होगा। मैं मानता हूँ कि ICFA के द्वारा, खान साहब के द्वारा और ये ममता जी ने जो एक अंक निकाला है, ऐसे विषयों की अब सतह पे ये आ रहे हैं और हम सब इनके साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। आप साइंटिस्ट के रूप में जुड़े हैं या एकेडमिक के रूप में जुड़े हैं या स्टूडेंट के रूप में जुड़े हैं या मैं इसमें मंत्री के नाते जुड़ा हूँ, मगर हम सब एक ही जहाज़ के प्रवासी हैं। सो हम सभी को एक दिशा में सोचते हुए काम करने का समय आ गया है और भारत इसका नेतृत्व करे। ये बहुत आवश्यक इसलिए है कि अब दुनिया मान रही है कि गाय का दूध उत्तम है, अब दुनिया मान रही है कि गाय का गोबर से ज़मीन को फर्टाइल किया जा सकता है, अब दुनिया मान रही है कि इम्यूनिटी का सबसे अच्छा कोई सोर्स है तो वो गाय का दूध और घी है। ये सारा अब साइंस से अप्रूव्ड होकर विदेश से जब इधर आता है तब हमारा मन मानने को रेडी होता है, मगर कब हमारे पुरखे लिख के गए गाय माता का पूजन करो और गौमूत्र को पवित्र करो, गाय के गोबर से अपने घर में यदि आप चौका लगा देते हो तो आपका घर पवित्र हो जाता है। ये परंपरा सदियों से भारत में चल रही है, वो ऐसे ही थोड़ी ही चलती थी। उसके पीछे बहुत बड़ा राज ये था कि मल और मूत्र, जरा गौर से सुनना, मल और मूत्र
किसी का पवित्र नहीं होता है, किसी का। इसके नीचे 3 रेड अंडरलाइन, आप जिसको भी डालना है डाल सकते हो। किसी का नहीं, पूरे सृष्टि में अकेली गाय माता है जिसका ये पवित्र है। और ये बहुत बहुत ही हमारे पुराने शास्त्रों में इसे इसका जिक्र है। ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, मगर इस पर हमने गौर नहीं किया। अब गौर हो गया है तो इसको गर्व से फॉलो करें और इसका सही तरीके से विज्ञान, हमारा अनुभव, इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए अब इसमें हमें ताकत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ख़ास करके वेटरनरी, पशु चिकित्सा के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वो लघुता ग्रंथि से आप इस काम के साथ मत जुड़िए। आप एक दिव्य काम को अंजाम दे रहे हैं, इसी भाव के साथ इस काम को अंजाम दोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मंथन को, इस अपने समिट को बहुत ही अच्छी सफलता मिले और आप सब लोग 2 दिन के लिए पूरे मनोयोग से इनके साथ जुड़े और इनके तारतम्य हमको भी भेजे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद. And ladies and gentlemen, we are indeed grateful to all our sponsors for extending their wholehearted support to us in organizing this event. And I would request the Honorable Minister to kindly do the honors of presenting mementos to all our sponsors. माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वे हमारे सभी sponsors को memento भेंट कर प्रोत्साहित करें. We would invite our representatives of the sponsors from Ananda Group. Do we have anybody here from the Ananda Group? From Venky's, Zenix Animal Health, Himalaya Group, Ayurved, from Ayurved, we have Dr. Kalra here. International Livestock Research Institute, we have Dr. Schillinger. I would request Dr. Schillinger to kindly receive on behalf of the International Livestock Research Institute. Venky's, invite representatives of Venky's to kindly receive a memento. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for all our sponsors. Coming up next is our representative from Himalaya Group. Do we have representatives from EMIL and Vivan Life Sciences? Zenix Animal Health, EMIL, representatives of EMIL, and from Vivan Life Sciences. Do we have anybody from Amul?
We have 7 representatives from Amul. Let's put our hands together for them. Thank you very much indeed, sir. May I now request Mrs. Mamta Jain, Editor and CEO Agriculture Today, to kindly do the honors of presenting a token of gratitude to our Honorable Minister. माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और यहाँ उपस्थित हुए और सभी को अपने शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शित किया. हार्दिक धन्यवाद. We now present to Secretary Department of Animal Husbandry and Dairying, Shri Atul Chaturvedi. To Dr. Praveen Malik, Commissioner Animal Husbandry. To Dr. Umesh Sharma, President Veterinary Council of India. Dr. Umesh Sharma ji. To Dr. Shillingar. Thank you, sir, for gracing the occasion. To Dr. B.N. Tripathi, DDG Animal Science, ICAR. Dr. Tripathi. And to Dr. K.M.L. Pathak. And I would now request Mrs. Mamta Jain to kindly propose the vote of thanks. Good evening, everyone. Honorable Chief Guest, sir, distinguished dignitaries on the dais, panelists of the evening, stalwarts from the animal health sector, and delegates across the floor. As we all know, animal health plays a crucial role in realizing Honorable Prime Minister's vision of natural farming and doubling farmers' income. Natural farming is not possible without healthy cows and healthy indigenous cows, in fact, and integrating farming with dairy, poultry, fisheries, etc. add to the farm revenue and sustainability. Honorable Chief Guest, sir, your encouraging presence today shows a strong commitment to the development of animal health sector and recognizing its contribution towards achieving the $5 trillion economy for India. We strongly feel that the brainstorming sessions today and tomorrow and success stories that would be awarded will go a long way in motivating all stakeholders working with this very important segment. It is such an honor to be able to organize such an elite event, and this would not have been possible without the unconditional and unwavering support from the Ministry of Dairying, Animal Husbandry and Fisheries, specifically Dr. K.M.L. Pathak sir, Dr. Praveen Malik sir, and Dr. B.N. Tripathi sir, who have been our backbone during the entire planning process. I'm also grateful to all our sponsors for having faith in us with this initiative. Thank you, Dr. Khan, for inviting us to co-organize this summit with ICFA. Our special gratitude to all experts and delegates who will be sharing their wisdom and expertise to brainstorm on the way forward during the 2 days conclave. I, on behalf of Indian Chamber of Food and Agriculture and Agriculture Today Group, extend a very hearty vote of thanks for gracing the first India Animal Health Summit 2022 with your enriching participation. Thank you. Thank you very much indeed. और इसी के साथ माननीय मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए उद्घाटन सत्र का समापन करते हैं और आप सभी को चाय के लिए आमंत्रित करते हैं. चाय का आयोजन ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है. धन्यवाद. We request everybody to kindly be back in 15 minutes because we have a panel discussion session after this.
Can all ICFA and ATG team members please come up on the stage quickly, fast, so that we can have a photo with the Honorable Minister? Quickly, if you can join. Humongous task came with trials and tribulations, but with God by our side, we overcame with excellence. EMIL India Research Foundation, AIRF, has been constituted with cutting-edge, state-of-the-art new technology, GMP-compliant raw material storage and processing, ultra-modern extraction units. We have collaborations with top research institutions of India, like DRDO for Leucoskin, a breakthrough treatment for leukoderma, and with CSIR for BGR34, the 1998 National Award for Outstanding Entrepreneur, the 1998 National Award for Quality Products presented by the Honorable Prime Minister, National Award for Research and Development in the year 2000, and the Ayush Brand of the Year Award 2016, Animal Healthcare.
भाभी ये सब मामा जी के फार्म से आया है। ये वो सब छोड़, ये देख, ये घर का बना हुआ असली देसी शुद्ध घी, दानेदार और ये पनीर है, ये सब तुम्हारी मामी के हाथ का कमाल है। मामी जी का फोन घर पे लगाते हैं। अरे तुम क्या आदमी हो, सब कुछ ले गए और मेरे हाथ का बनाया पनीर और घी तो यही छोड़ गए। तुम भी ना एकदम सटिया बाद में बात करते हैं। ये पनीर भी ये फार्म जैसे ही है। आनंद करो आनंद करो आनंद आनंद करो। आनंद आनंद करो। Your doggos want to be tail-wagging healthy? Pamper them with Himalaya Companion Care's naturally healthy pet food. Himalaya, everything for your everything. Hit it. Want your little puppy to never run out of naughtiness? Get him started on Himalaya Companion Care's naturally healthy pet food. Himalaya, everything for your everything. Aww. Fufu's worried about his weight? Manage it with Himalaya Companion Care's naturally healthy pet food. Himalaya, everything for your everything. Wakes you up with a smile, journeys with you every mile, shares your every high, comforts you when you cry, 'cause his world is only you. And we know he means everything to you. Everything to you. That's why Himalaya Companion Care offers everything for your pet's healthy life. From natural grooming to healthy treats to science-backed nutrition and a wide range of natural products for the complete well-being of your pet. Because Himalaya offers everything for your everything. Everything to you. Pioneers and leaders in organized poultry, Venkateshwara Hatcheries, VH Group, has led with vision and tenacity. Today, they are recognized as one of the most integrated and progressive poultry conglomerates in the world. A broad spectrum of business includes breeding, pure lines, SPF eggs, poultry vaccines, animal health products, vitamin premixes, feed supplements, biosecurity solutions, chicken processing, egg powder plant, poultry equipments, soya extraction, sports nutritional products, medicinal nutritional products, and FMCG products. Their strength comes from an intimate understanding of the ever-changing and demanding poultry industry, from identifying the needs of the industry in preventive vaccines and health products to, most importantly, biosecurity products and services. Understanding the varied climatic conditions in India, market scenario and disease challenges, they have been successful in finding right solutions to constraints, making them the leader in all aspects of the business. It all started with the vision of one man, Dr. B.V. Rao. The journey of Padma Shri Dr. B.V. Rao was started in 1971
He was also supported in this quest by his wife, Srimati Uttara Devi Rao. With pioneering spirit, foresight and confidence, backyard poultry was transformed into a well-organized and promising industry which ranks amongst the best in the world. Today, the VH Group is the largest fully integrated poultry group in Asia and offers total support for poultry development under one roof. But how did he turn it around? The challenge and the resolution. During 1970s, when Padma Shri Dr. B.V. Rao started breeding operations in the country, poultry vaccines were not manufactured in India. Dr. Rao knew the importance of timely availability of good quality vaccine and decided to set up a vaccine manufacturing facility producing quality vaccine for poultry. Dr. Rao entered into technical collaboration with Messrs. Tri-Bio Laboratories Incorporated, USA, who were then the leader in Marek's disease vaccine in USA. Ventri Biologicals Vaccine Division of VHPL was established in 1979